Intentions are something that actually drives us forward in deciding for better for our future. नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो सुना होगा, सुना है, पढ़ा है. So the very first thing that needs to come to your mind whenever you are deciding for anything in your life, anything that might matter for the future that you are dreaming of, the first thing and the very first thing that needs to come to mind is the intentions behind it. उसके पीछे आपकी नीयत क्या है? And the second thing that comes in is the action that you take on basis of that very intention that you had. जो नियत हम करते हैं और उसके बेसिस पे जो हम अमल करते हैं, that actually creates our future, our present, and that actually makes us being remembered for what we have been through. किस तरह हमने अपने लोगों के साथ मामलात किए, किस तरह हमने अपने असातिज़ा के साथ अपना किरदार रखा, किस तरह हमने अपने दोस्तों और अहबाब के साथ अपने मामलात रखे. That is one of the very foremost boundaries, or you can say the foundations, which actually creates your boundaries for having a better personality to be useful as that very pencil that I told you the story about. But intention कैसे आए? Intention comes with a lot of other things that needs to be included in the package to have that very thing. To achieve the element, not having been surprised by the circumstances that comes in front of you, not having been surprised by the people that are within, in your reach, in your social circle, in your network circles. Because आप जो रिश्ता रखते हैं, जो बात करते हैं, जो अमल करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो पढ़ते हैं, इसके बाद जो आपने डिसीजन लेनी है अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके पीछे नीयत क्या है? What is that one element that you need to keep in mind to decide for better? हम नमाज पढ़ते हैं ना, पहले नीयत करते हैं, नीयत के बगैर नमाज नहीं होती. हम कुरान शरीफ उठाते हैं, तिलावत की नीयत से उठाते हैं, वो नीयत नहीं होती तो तिलावत आपकी कबूल नहीं होती. आप किसी महफिल में जाते हैं, आपकी नीयत नहीं होती, किसी शादी में भी जाते हैं, आपकी नीयत ना हो तो आपका मूड ख़राब ही रहता है. अम्मी ज़बरदस्ती ले आई है, हाँ, मेरे तो नहीं आना चाह रही थी. It happens, right? It's part of life. लेकिन what if? Let me give you a bit of an example. What if the next time your mother tells you कि मेरे साथ तुमने शादी पे जाना है, the boys and the girls both, right? और आपकी नीयत नहीं है, लेकिन आप उस वक्त अम्मी की खातिर, उनकी खुशी के खातिर, negating every single element of emotion or sentiment or whatever the attachment you might have for a TV show or for your phone or whatever, or an engagement with a friend or a cricket match or whatever the engagement other than your family, आप सिर्फ अम्मी की खातिर उनको कह दें, जी अम्मी आपके साथ जाऊंगा या जाऊंगी. So she'll be happy and you'll be surprised how relieved you'll be feeling. आपने जब कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ पे इनकार किया है तो डाउन द लाइन, डीप इन योर हार्ट, यू फील गिल्टी, राइट? यू ऑलवेज फील गिल्टी. बेशक वो अपने मुंह पे, आपके चेहरे पे, आपके सामने कुछ ना कहें, ठीक है बेटा रुक जाओ, एंड यू कम अप विद द वेरी बेस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस दैट यू कैन कम अप विद फ्रॉम योर एक्सक्यूजेस बुक, राइट? मैंने तो ये करना है, मेरा टेस्ट है, ये है, वो है, एंड यू आर लेट गो, एंड दे आर देयर, दे आर सिटिंग अलोन, watching other people having fun with their children and you not being there. So just imagine what is your mother or father going through at that very time. लेकिन आप ये नीयत थोड़ा सा चेंज कर लें, उसकी बेसिस पे आप एक्शन ले लें, तो that defines your personality, that defines your relation with your mother and father, that defines your relation with your friends, that defines your relation with how you perceive your life, of your own life actually. Because at the end of the day, happiness and success is your own. Nobody can take that away from you. It's your right. It's your own effort that you need to do. So जो हम एक डिग्री शिफ्ट की बात करते हैं ना, so the first thing that needs to be there is the intention behind everything. And that is coupled with the action that needs to be taken according to the better intention. The better intention in taking that major step.